So let's getting 4:10 now. So let's start the class for today's session. Now moving on to the main part of today's class. In today's session, we shall revise what we studied yesterday. The topic for this week is models. Action plus condition. You can see the words on the screen. Divyaji, just unmute and read the words related to models. Just read the words on the screen. Yes, sir. Proceed. Action plus condition: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, need to, ought to. Ought. Right. Thank you so much. And as we have discussed, these are the words of English which help you to understand action. क्या काम हो रहा है वो बताया जाएगा. प्लस कंडीशन, किस स्थिति में किस तरह से वो काम किया जाता है. Action plus condition gives the word model. We have studied can, could, may. 3 models हमने पढ़ लिए हैं. So let's revise the concept of can, could and may. Let's proceed further. Okay. You can see on the screen, it's a revision idea. A can, the word can shows ability in the present tense. आज की योग्यता. What you can do today. In Hindi, it shows कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं. This is your today's present capacity. Ability, योग्यता, क्षमता, capacity. If you can do something means you are able to do something. आप कर सकते हो. If you go through the sentences, मैं पढ़ सकता हूं, I can read. हम जा सकते हैं, we can go. वे खेल सकते हैं, they can play. मीरा नाच सकती है, मीरा can dance. तो can means सकता है, सकती है, सकते हैं. हम पढ़ सकते हैं, we can read. हम कपड़े सिल सकते हैं, we can stitch clothes. हम फल काट सकते हैं, we can cut fruits. So can means सकता, सकती, सकते हैं. Now second is could. Could means past ability. योग्यता पहले थी, सकता था, सकती थी, सकती थे. हम खेल सकते थे, we could play. So when you want to speak something about past, not today, yesterday, बीता हुआ समय, and you want to say something about कर सकते थे, use could. You are talking about past. You are talking about past tense, बीता हुआ समय, use could. Okay? Okay. You can revise some sentences. Divyaji, please unmute and read the sentences in could. मैं मैच जीत सकता हूँ. I could win the match. मैं मैच जीत सकता था. था, Not sorry who, sir. था. Sorry sir, Continue. था. मैं मैच जीत सकता था. I could win the match. मैं Okay. मैच नहीं जीत सकता था. I could not win the match. It's क्या a मैं negative sentence. यस सर. Continue. क्या मैं मैच जीत सकता था? Could I win the match? क्या Okay. मैं मैच नहीं जीत सकता था? Could I not win the match? Right. In the model also, there are 4 sentences. Positive, I could win the match. Negative, I could not win the match. Interrogative, it's a question. Could I win the match? क्या मैं मैच जीत सकता था? And negative question, could I not win the match? So could means सकता, सकती, सकते थे in the past tense. That's the second model we study. Now one more thing. Could is used for request. अगर आप request करते हैं, then could is used. Could you please give me a pen? Could you please tell me the time? Could you please help me? So could शब्द request में काम आता है. The word could is used in request. At the end of the class, we having a speaking session. We are having a speaking session जहां पर हमने request कैसे करते हैं वो study किया था. To make a request, use could. Can I take your pen? It's correct. Can I take your pen? It is correct. क्या मैं पेन ले सकता हूं? But
To make a request, could is better. Could ज्यादा अच्छा है. Could you please give me your pen? Could you please give me some water? Could you please give me your books or something? If you want to request something, go for could. Now, third model, may. May, the word may means संभावना, शायद, chance or probability in present. You are not sure. वह शायद आ जाएगा. He may come today. आज बस शायद बारिश होगी. It may rain today. Now listen once again. In Hindi, we have two words, shayad and shayad hi. Shayad means may. Ram shayad kal aayega. Ram may come tomorrow. Ram shayad hi kal aayega. Ram may not come tomorrow. So shayad means may. Shayad hi may not. This idea is clear to all of you. Let me know. If you're having some doubt, unmute and ask me. Shayad may. Shayad hi may not. If you have some doubt in these three words, can, could, may, you may ask now. आप पूछ सकते हैं. Now again, let me confirm. May is used for condition, संभावना. It may or may not. May or may not. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Again, may is used for request. जैसे could काम आता है, उस तरह से may भी request करने में काम आता है. May I know your name, please? May I take your pencil? May I have some water? मैं कुछ पानी पी सकता हूँ. So could and may, these two words are used for requesting. This is clear to all of you? Then let's move further. Okay. Mansi, just unmute and read the fourth model. Should. Should चाहिए. Okay. सलाह जमींदारी. जिम्मेदारी. जिम्मेदारी. राम को दवा लेनी चाहिए. राम should take medicines. मैं थका हुआ हूँ. मुझे सोना चाहिए. I am tired. I should have rest. Okay. Now, in the second sentence, मैं थका हुआ हूँ. I am tired. मुझे सोना चाहिए. There are two different ways. I should have rest or simply I should sleep. मुझे सोना चाहिए. In Hindi, चाहिए. In English, it goes should. मुझे सोना चाहिए. I should sleep. मम्मी को खाना बनाना चाहिए. मम्मी should cook. हमें पढ़ना चाहिए. We should study. तो should is used for advice. सलाह देने के लिए, जिम्मेदारी बताने के लिए. For example, people should respect the country. लोगों को देश का respect, सम्मान करना चाहिए. So should means करना चाहिए. Now one by one, all of you unmute yourself one by one and speak one sentence in Hindi and English. Should के साथ, with should. For example, हमें सब्जी खानी चाहिए. तो we should eat vegetables. One by one, start in Hindi and English using should. Start now. Am I audible to you? Just one by one, unmute and speak one sentence. Okay. I should drink water. हिंदी में बोलिए पहले. मुझे पानी पीना चाहिए. Okay, I should drink water. Okay, next candidate. मुझे खेलना चाहिए. I should play. Okay. Next candidate. Actually, I cannot see your names on the screen. Who is the next person? Just unmute and speak one sentence in Hindi and English. दो जनों ने बोल दिया है. Okay, one more. Navika, are you there? Yes, sir. We should take proceed some with one precaution in pandemic. Okay, we should take some precaution. हिंदी में हमें हाँ. सावधानी रखनी चाहिए. We should take
some precautions during pandemic. The should means salah. Second, we should not drink and drive. We should not drink and drive. We should cross the road carefully. People should not cut the tree. People should maintain peace. Peace means shanti. So should means salah or zimmedari in English. It goes with should. Chahiye is equal to should. Should is advice. Now continue next. Okay. The 4 sentences are given on the screen. Navika, just read and proceed further. हमें घर जाना चाहिए. We should go home. हमें घर नहीं जाना चाहिए. We should not go home. Okay. क्या हमें घर जाना चाहिए? Should we go home? क्या हमें And the घर last? नहीं जाना चाहिए? We should not go home. Should we not go home? Right? In the question, should comes in the beginning. Whenever you ask me a question, the word, the main model should come in the beginning. Positive, we should go home. Negative, we should not go home. Should we go home and should we not go home? Okay. This is the 4th model we studied. Should. Salah dene mein kaam aayega. Now next we have must. In Hindi, it is compulsory. Jarur chahiye. In Hindi, should means chahiye. Must means chahiye. The difference is that should means salah. If you do, it's okay. If you do not do it, okay. Must means compulsory. Karna hi padega. It is compulsory. Use must. Okay, Divya ji, just read the first sentence. Yes, sir. हमें कानून का पालन करना चाहिए. We must follow the law. Okay, next. उन्हें यहाँ आना चाहिए. They must come here. Okay, right. So must means compulsory. आना ही चाहिए. उन्हें यहाँ आना चाहिए. It is compulsory for them. All those things which are compulsory. For example, we must pay the tax. We must help the needy people. Those things which are compulsory should be given with must. Now, let's take the next sentence. Okay. उसे दवा लेनी चाहिए. This is compulsory. He or she must take the medicine. In this sentence, अगर आप सलाह दे रहे हो, use should. उसे दवा लेनी चाहिए. नहीं लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But if it is compulsory, use must. करना ही पड़ेगा. There is no other option. Okay, now I have stopped the presentation. Now one by one, let me confirm your status. Okay, Mansi, I am giving a sentence in Hindi, translate in English. The sentence is, हमें टैक्स भरना चाहिए. We must pay a tax. Okay. Navika ji, for your sentence, उन्हें घर आना चाहिए. Navika ji, your sentence, उन्हें घर आना चाहिए. They must come home. Okay. Jaswant, you are a new joining. Your sentence, मुझे पढ़ना चाहिए. We should study. I should study. I Or you should can study. say, I must study. Must means compulsory. पढ़ना ही पड़ेगा. Okay. Kanchan, your turn. Okay. उसे खाना बनाना चाहिए. She must cook food. Okay, right. And Krishna, your sentence, उसे पौधे उगाने चाहिए. Krishna, just try. उसे पौधे उगाने चाहिए. उगाने को कहते हैं grow. Try. Yes, Krishna. They must Okay. grow उगाने को grow plants. a plant. Okay. They must grow. It's okay. Sentence था उसे. He must grow plants. उसे पौधे He must grow उगाने plants. Okay. And must means compulsory. करना ही पड़ेगा. And Divya, just unmute your sentence.
तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए. They should. No. You should. You should. Okay. Sir, again repeat your sentence. तुम्हें घर जल्दी आना चाहिए. You should. Come You home should. Sorry, sir. You should come home and and jaldi, fast. early, Fast. not fast, Early. 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 Early Okay. means jaldi, and late, Okay, you know. sir. You should come Okay, home early. Okay, Divya. Thank you so much. Okay. So the first 5 models we have studied. In Hindi, it is chahiye. But in English, 2 words are there. It is compulsory, must, it's okay, use, should. And this model we will study this complete week. इस पूरे हफ्ते we will study models and go through all the rules step by step. And you see all of you, मैं आपको जो sentence देता हूं वो बहुत basic level के होते हैं. These are the basic level sentences which we are studying this first week. Very simple. राम खाना खाता है, हम खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं. These are the simple sentences in English. We are having a 2-month, 60 days program. We are going step by step. In the coming days, you will see more and more bigger sentences and some more words in your English. Now today, we are going to start tense. The 12 tenses, the first tense, present simple. हर tense में एक खासियत है. Every tense is having one unique property. You have to see the unique speciality of the tense. Hindi to English convert कैसे होगा? We will learn step by step. One tense will be completed in 2 days. एक tense 2 दिन में पूरा होगा. So it will be a practice also and revision also. So let me share my screen to you. Okay. Now listen very carefully. I made a small mistake. I'm really sorry for my mistake. When I said, let me share my screen, the correct is with you. मैं अपनी screen share करूंगा आपके साथ. And I told to you. So share to you is wrong. Share with you. That's the correct. Let me share. Let me share my screen with you. I suppose the screen is clear to all of you? Yes, Okay. sir. Okay. Okay. Now you can see the screen. The names of 12 tenses are given on the screen. I hope every one of you clear with the tense. Navika ji, just read the 12 names quickly. Okay, sir. Present Continue. simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past Okay. simple, past continuous, past perfect continuous, Good. future simple, future continuous, future perfect continuous. Fine. So we have got 12 tenses. We will start with the first tense, present simple. Now you have to learn. ये आपको learn करना होगा. हिंदी में sentence कैसा होता है? हिंदी में sentence कैसे बनता है? क्या होता है? And what is the English translation? So let's start the first tense, present simple. Okay. The first tense, present simple. Just note the 3 words: daily actions, habits, and step-by-step activity. Daily action जो रोज करते हो, habit आपकी आदत, step by step जब कोई काम करते हो. Now let's give me some example. मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहाता हूं, मैं खाता हूं, सूरज उगता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, माँ खाना बनाती है. All these sentences are present simple. Present simple means you can see in Hindi also. In Hindi, ता, ती, ते, है, हूं, हैं. In Hindi, जिस वाक्य में ताती ते आता है उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं. जिस वाक्य में ताती ते आता है, जैसे पापा ऑफिस जाते हैं, शिकारी शिकार करता है, गाय दूध देती है, हम बाजार जाते हैं, हम सब्जी खरीदते हैं. जिस सेंटेंस में ताती ते आएगा, दैट इज प्रेजेंट सिंपल. सो थिंक इन हिंदी. पहले हिंदी में सोचो.
तातीते, मैं स्कूल जाता हूं। सीधा एग्जांपल, राम स्कूल जाता है, माँ खाना पकाती है, हम काम करते हैं। दिस इज प्रेजेंट सिंपल। तो आपको हिंदी में सोचने होंगे प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। ओके कृष्णा, जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी 3 sentences इन प्रेजेंट सिंपल। हिंदी में 3 सेंटेंस बताइए प्रेजेंट सिंपल तातीते। मोहन खेलता है। ओके, कुछ और? कृष्णा, पापा ट्राई 2 more sentences, क्विक। कृष्णा, जस्ट ट्राई 2 more. राम Okay, बाजार जाता है। right, and one more. One more. ज्यादा घबराइए मत, बी क्लियर, तातीते आना चाहिए। वन मोर, क्विक। मैं खाना खाता हूँ। राइट, ऑल दो सेंटेंसेस जिसमें तातीते आता है, तो सेंटेंसेस हैविंग तातीते, दीज आर प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो व्हेन यू थिंक इन हिंदी, जब आप हिंदी में सोचते हैं, तातीते मींस प्रेजेंट सिंपल। नाउ कम टू द इंग्लिश पार्ट। ओके, you can see on the screen, let me zoom it. Okay, subject plus v1, v means verb, verb 1, or v1 plus s या es plus object. It means subject plural है, बहुवचन है, काम करने वाला subject बहुवचन plural है, तो आपको सीधा काम बताना है। काम करने वाला एक है सिंगुलर, तो एस लगाना है। लेट्स लिसन सम एग्जांपल, ट्राई टू लिसन केयरफुली। राम प्लेज क्रिकेट, राम एक है, राम प्लेज हो जाएगा। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। बहुत सारे हैं, यूज V1, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक है, यूज एस और ES। कृष्णा, रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑन द स्क्रीन। राम स्कूल जाता है। राम गोज टू राम स्कूल। इज सिंगुलर, राइट, राम सिंगुलर है, राम एक है। राम गो टू स्कूल नहीं, राम गोज टू स्कूल। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर एक की बात हो रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, यूज एस। मम्मी कुक्स फूड, मम्मी खाना बनाती है, कुक्स। पापा कम्स होम, पापा घर आते हैं। दादाजी, ग्रैंडफादर गोज टू गार्डन, गार्डन जाते हैं, गोज टू गार्डन। कृष्णा, रीड द सेकंड सेंटेंस। सूरज सुबह उगता है। द सन Okay. राइज इन द मॉर्निंग। No, it's wrong. The sun rises in the morning. Once द again, सन repeat the राइज इन sentence. द मॉर्निंग। Okay, rises. सूरज एक है, rises. Okay. Read the next sentence. हम खाना लाते हैं। वी ब्रिंग Okay. फूड। We एक है, बहुत सारे हैं। कृष्णा, we singular या plural? We एक है, बहुत सारे हैं। Plural, बहुत सारे, plural. So use bring. We bring food. और अगर ये होता राम खाना लाता है, राम brings food. राम brings food, we bring food. काम करने वाला one person, use S, बहुत सारे, verb first form. वे किताब बेचते हैं, one more sentence. वे किताब बेचते हैं, they sell books. Okay? Okay. The last sentence. Divya ji, just unmute and read the last sentence in Hindi. Yes, sir. Okay, the last sentence. वह किताब बेचते हैं। Okay, वे they sell वे books. किताब बेचते हैं। They sell book. Now they is singular or plural? Sir, they plural. Plural, right. अब last sentence मैंने, it's in Hindi. Just read the Hindi sentence. शिकारी रोज आता है। Okay, now try this in English. Shikari means hunter.
Hunter. Yes, sir. Continue. Hunter. Hunter come daily. Hunter come या comes? Sir, hunter comes daily. Right. That's the right sentence. Hunter comes daily. Hunter एक है, hunter singular. We will use comes. Hunter comes daily. This is the positive sentence of present simple tense. In Hindi, tati te. In English, we won, or use ses. This is the positive part we have studied. Now, without any delay, बिना देरी किए, without any delay, बिना देरी किए, just read some more sentence. Navika, just read the first sentence. Continue. Navika ji, राम continue. राम पढ़ता है, राम No, no, no. पढ़ाता है. सॉरी, हाँ, राम पढ़ाता Okay. है, राम टीच। Con- मैं राम? कपड़े सिलता हूँ, Okay. आई टीच क्लॉथ्स। Okay, Navika, just a minute. Just a minute, Navika. Navika, I singular है, plural है? I singular or plural? I एक वचन है. Okay. एक वचन। In Hindi, right. In Hindi, I singular है, एक वचन है. But in English, I is plural. I को बहुवचन माना गया है. I is बहुवचन. So the sentence is I stitch clothes. I बहुवचन है, I plural है. Directly stitch आएगा, stitches नहीं आएगा. I is plural. I को बहुवचन माना गया है. Okay. Continue, Navika. Third sentence. खिलाड़ी मैच खेलते हैं, प्लेयर्स नहीं. विन। खिलाड़ी मैच खिलाड़ी जीतते. मैच जीतते हैं, प्लेयर्स Okay. विन मैच। Okay. वे Player समान singular, plural. सिंगुलर। No, no, no. Players बहुत सारे हैं. Plural. ओके। Okay. Fourth sentence. वे सामान खरीदते हैं, दे बाय Okay. द स्टफ। Stuff यानी वो सामान जिसका नाम आपको नहीं पता. ओके। And last sentence. वह सामान खरीदता है, दे बाय द स्टफ। He एक वचन है, singular. He buys the stuff. और they बहुत सारे हैं, buy the stuff. So this topic is clear to you. Present simple. ताती ते in Hindi and English. We won. Yes, sir. Plural. SEIS singular. Okay. Now let's come to the negative part. Okay. Now Krishna, just read what is given on the screen. Negative. Subject plus does not plus verb की first form plus object. Okay. Does not, or second option is do not. Do not. Okay. We have two options. Does not, do not. Do not. Does not singular, he she it singular के लिए आएगा. Do not plural के लिए आएगा. I you we they. So does not for singular and do not for plural. Okay. Divya ji, just unmute yourself and tell me. Ram does not go to school. Ram do not go to school. Which is correct? Ram does not or Ram do not? Ram do not. No, sir. No, no, Ram no. It's wrong. No, sir. Ram does not. And Q, why Ram does not? Because sir, Ram plural है. Is Ram is singular. Okay, sir. Sorry, that's singular. Okay. Now once again, singular does not, plural do not. Okay, Navika ji, your turn. Just tell me which is correct. Mummy does not cook food. Mummy do not cook food. डज नॉट। Okay, mummy is singular, does not. Okay, Mansi, your turn. Children Yes, do sir. not go school. Children does not go school. Sir, children does not go to school. No, 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 it's again wrong. Children बहुत सारे हैं. Children plural है. Do not. Do not. Clear? Sir, I'm not clear. Any doubt? Yes, sir.
आस्क में क्या पूछना चाहती हैं? सर चिल्ड्रंस मतलब नो नो, चिल्ड्रंस रॉन्ग वर्ड. चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे. चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस इज द रॉन्ग वर्ड. चिल्ड्रन, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे. चिल्ड्रन डू नॉट. Amansi, are you there? यस सर. Okay, one more sentence you try. Cows बहुत सारी हैं. Cows do not eat grass. Cows does not eat grass. Which is correct? Cows do not. Cows does not. Cows do not. Okay, right. Cows बहुत सारी हैं. Do not. Okay. And Oh, Kanchan, just sorry unmute. sir, Yeah. मैं कंफ्यूज हो गई थी. Sorry sir. Okay. 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 अब कोई डाउट है That आपको? time I was confused sir. Okay. Okay. Now once again repeat. Singular एक है. Does not. Does not. बहुत सारे हैं. Do Do not. not. Clear? Yes sir. Okay. Kanchan, unmute and let me know the correct answer. Windows. Windows means khidki. Windows means khidki. Windows does not open. Do not open. Do not open. Right. That's the perfect answer. Thank you so much, Kanchan. Windows Now do you not study. open. That's the perfect answer. Now see on your screen. He, she, it. Does not. I, you, we, they. Do not. I do not go to school. You do not sleep. We do not play. They do not come. I, you, we, they. Do not चलता है. Is it clear? Okay, now let's try some sentence. Okay. Now Mansi, read the first sentence in Hindi and both English. Okay sir. हम मंदिर जाते हैं. We go to temple. In negative, We do not go to temple. okay. Correct. हम बहुत सारे हैं. Do not go to temple. Next sentence. मैं खिलौने रखता हूँ. I Hmm. keep toys. I do In not negative. keep toys. Okay. Now stop 1 minute. I, okay. Mansi, I is singular or plural? Singular. No. In English? Plural. In English, I is plural. I is plural. So, in positive sentence, I keep toys. Right? In negative, I do not. I is plural. Okay. Divya ji, just continue with the third sentence. Yes, sir. Ram sabji काटता है. Ram cuts vegetable. Ram does not cut vegetables. Okay, Divya ji, you tell me, Ram is singular or plural? Sir, Ram singular. Singular. So Ram एक है. So cuts आएगा या cut आएगा? Ram cuts या Ram cut? Sir, Ram cuts. Cuts. Ram एक है इसलिए S लगेगा. और Yes, जब sir. आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो does So, not sir, के साथ not yes. सिर्फ कट आएगा. Does not में Okay, sir. ES लग चुका है. Yes, sir. अब कट में S नहीं लगेगा. Okay, sir. Okay. Now all Yes, of you sir. listen see the example 3. Ram is singular. एक वचन. Ram cuts. हमने S लगाया. In the negative sentence, does में हम S लगा चुके हैं. Does not. Does में ES लग चुका है इसलिए कट में S नहीं लगेगा. Ram does not cut vegetables. In positive sentence, cuts. Ram is singular. Negative sentence, does not cut. Divya ji, go for the fourth sentence. Yes, sir. Continue. माँ खाना लगाती है. Okay. Mother serves food. Mother does Okay. not serve food. Okay. Serve यानी लगाना, खाना परोसना. Yes, sir. खाना परोसना. Okay. This is the first part जो आपने पढ़ा. Positive. And now I will say the name one by one.
यू ट्राई वन सेंटेंस इन हिंदी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक सेंटेंस आप बनाएंगे तातीते हिंदी, इन इंग्लिश पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, आई विल स्टार्ट विद दिव्या जी. दिव्या जी, वन सेंटेंस इन हिंदी, पॉजिटिव नेगेटिव. कंटिन्यू. यस सर. सर हिंदी में बनाना है इंग्लिश में? बिल्कुल, पहले हिंदी में बनाइए आप, देन इंग्लिश. ओके सर. कंटिन्यू. मैं खाना खाती हूँ. ओके, इन इंग्लिश. आई ईट्स फूड. आई ईट्स या ईट? ईट्स. नो नो नो, आई इज प्लूरल. आई को बहुवचन माना गया है. ओके सर. तो again, आई मैं खाना खाती हूँ. आई ईट फूड. ओके, एंड नेगेटिव. मैं खाना नहीं खाती. आई डू नॉट ईट फूड. ओके, दैट्स द परफेक्ट आंसर. मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड. नेगेटिव, आई डू नॉट ईट फूड. ओके, कंचन, ट्राई द नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके सर. हम स्विमिंग करते हैं. ओके, वी गुड. ओके, और हम स्विमिंग नहीं करते हैं. वी डोंट स्विम. वी डोंट स्विम या वी डू नॉट स्विम. परफेक्ट आंसर. मानसी, कंटिन्यू विद द थर्ड सेंटेंस. मैं थर्ड सेंटेंस. ओके, योर एग्जांपल. मैं बुक पढ़ती हूँ. ओके, इन I इंग्लिश. read food. आई रीड द बुक. राइट, रीड्स नहीं होना चाहिए, आई रीड होना चाहिए. Sir, I say I read. परफेक्ट. नेगेटिव. मैं बुक नहीं पढ़ती. ओके, I doesn't read books. वन मिनट. आई डजंट क्या आई डोंट? क्या I सही है? don't. राइट. आई डू नॉट, आई के साथ डू नॉट आएगा. आई डू नॉट, आई डोंट रीड बुक. Yes. ओके, जसवंत, जस्ट कंटिन्यू विद अ सेंटेंस, हिंदी एंड इंग्लिश. राम घर जाता है. Okay. राम गोइंग टू होम. राम घर नहीं जाता है. राम डज नॉट गो टू होम. योर सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट. राम डज नॉट गो टू होम. फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग. राम गोज टू होम, घर जाता है. गोज टू. ओके, गुड. नाउ नरेश, यू ट्राई वन सेंटेंस. राम स्कूल विद्यालय जाता है. ओके, इन राम इंग्लिश. गो टू स्कूल. नो नो नो, राम. राम विद्यालय गो टू स्कूल. ओके, राम गोज टू स्कूल. हाँ, गोज टू स्कूल. एंड नेगेटिव. राम स्कूल नहीं जाता है. इंग्लिश. राम डू नॉट गो टू स्कूल. राम डज नॉट. अगेन, राम एक है, डज नॉट. ओके सर. ओके, राम डज नॉट. लिसन वंस अगेन. एक है, डज नॉट. बहुत सारे हैं, डू नॉट. ओके, नाउ लास्ट आई विल गो टू. ओके सर. ओके, नविका जी, यू विद द लास्ट सेंटेंस. हम डेली प्रार्थना Okay, करते perfect. हैं. वी प्रे डेली. और वी डू नॉट प्रे डेली. Perfect sentence. This is the first tense जो आपने पढ़ा. Present simple, तातीते. In English, V1, negative, does not, and do not. So this is the grammar part we have done. Let's move to the vocabulary part today. Let me share my screen with you. Okay. Now you can see vocabulary, the word power, opposite. Opposite in Hindi, vilom shabd, ulta seedha. So one by one, we will read the words. Okay. Navika ji, just read the first 5 words. पहले 5 आप पढ़ेगी. In English you read, I will explain Hindi. Read the first word. Above. And Below. Okay, above means ऊपर, below means नीचे. Above means ऊपर, below means नीचे. Next. Absent. Present. Absent, you know, नहीं आना. Present, होना. Third word. Accident और intent. And intent. Accident गलती से होता है.
इंटेंट जानबूझकर होता है, एक्सीडेंट गलती से, इंटेंट जानबूझकर. फोर्थ वर्ड, accomplishment or Okay. failure. फेल. Accomplishment जीतना, हासिल करना जीत को, एंड फेलियर फेल हो जाना. फिफ्थ वर्ड, Achieve, fail. अचीव अगेन, पाना, फेल, खोना. ओके, नाउ दिव्या जी कंटिन्यू विथ 6 to 10. Yes, sir. Add, Okay. include, abstract, exclude. ओके, एड मींस साथ में लेना, इंक्लूड करना. सब्ट्रैक्ट हटाना, एक्सक्लूड करना. नोट द स्पेलिंग्स एंड द वर्ड क्लियरली. नेक्स्ट वर्ड, Ad- इट्स एडजेसेंट. adjacent, near, distant. एडजेसेंट. ओके सब बहुत ज्यादा zoom. Okay, sir. ओके ओके ओके. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, कंटिन्यू. Distant, far. Okay, see, adjacent means पास में, near. Distant, दूर, far. Eighth, Admire admire, and praise. praise. Praise means तारीफ करना. Admire, तारीफ करना. Opposite, what is the opposite word? Sir, you speak. It is criticize. Criticize. Okay, sir. Criticize. Criticize means Okay. बुराई करना. So Okay, one sir. more, admire, praise, तारीफ Yes. करना. Criticize, बुराई करना. Okay, sir. Okay. 9. Accept, reject. Okay, accept हाँ करना, reject मना करना. Yes, 10th sir. word, Mm, it's adore, adore, love, hate. Love, hate. Adore का दूसरा मतलब होता है love. I love my parents. I adore my parents. My teachers love me. My teachers adore me. Okay. Now, Mansi ji, just start with the words 11 to 15. Advance, retreat, Okay, afraid, just a minute. Just a deny. minute. You know the. Just a minute. Can you tell the meaning of advance and retreat? क्या मतलब है इनका? Advance means, sir, can I tell in Hindi, please? Okay, try. कुछ एडवांस में मिल गया हो. Advance. Okay. Mhm. Okay, let me make two correction. Mansi ji, if you want to ask something, use may I tell in Hindi, not can I. May is more better for requesting. May I speak in Hindi? It is more good. Secondly, advance means to go forward, to go ahead. आगे जाना. Retreat, come back. पीछे आना. Advance means go ahead. Retreat means come back. Clear? आगे Okay. जाना. Advance. Advance now. आगे बढ़ो. Retreat now. पीछे आ जाओ. Next word. Affirm, deny, Affirm, sorry. deny. Okay, affirm means हाँ करना. Affirm का मतलब है accept करना. Same. Affirm यानी हाँ करना, हाँ करना, और deny Deny? means मना कर देना. मना करना, reject कर देना. Okay. Fourth word. Afraid, confident, Okay, now 1 minute. Afraid, डरना. Confident, विश्वास दिखाना. Now in English, afraid means डरना. But there is a sentence. एक sentence है English में, I am sorry. जब आप कहते हो I am sorry, उसका एक sentence और होता है I am afraid. I am afraid के दो मतलब है. मैं डरता हूं, correct. और दूसरा मतलब है मुझे माफ कीजिए, I am sorry. So I am afraid का एक और मतलब होता है I am sorry. Okay, continue, Mansi. after, before, aid, Okay. hinder. Okay, aid means help करना. To help someone, aid. Hinder, किसी को बर्बाद करना. Aid means help करना. And hinder means बर्बाद करना. Okay. Now let me see. Krishna, read the last 5 words, 16 to 20. Yes, sir. Alarm, comfort. Okay, alarm,
घबरा जाना, कंफर्ट सुकून से बैठना. इन इंग्लिश अलार्म के 2 मीनिंग्स होते हैं. फर्स्ट मीनिंग जो घड़ी में बजता है, दैट इज ऑल्सो अलार्म. एंड सेकंड, घबरा जाना, शॉक हो जाना. कंटिन्यू. alert, asleep, ओके, अलर्ट चौकन्ना रहना, अस्लीप सो जाना. alive, dead, ओके, allow, नेक्स्ट. forbid, अलाउ मतलब आने देना, फॉरबिड उसे मना कर देना. एंड alone, लास्ट वर्ड, अलोन मीन्स alone, अकेला, एंड टुगेदर. इन द स्पेलिंग दैट इज नॉट विजिबल क्लियरली, इट इज टुगेदर, TOGETHER, साथ में. So together means साथ में, alone means अकेले. So this is the fourth class and we studied the opposite words. और इन शब्दों में मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए. Plus you can use these words in your daily language. Now this is opposite part, the vocabulary part, the words of today's class. Now words हो गए. Now we will move to the proverb, words of wisdom. Okay, Navika ji, please read the proverb. Slow and steady wins in the race in Hindi. No. In हिंदी नीचे दिया है, वो गलती से टाइप हो गया. इन हिंदी, धीमी और स्थिर रेस जीतता है. इट मीन्स स्लोली एंड स्टीडी विन द रेस. धीरे धीरे चलने से ही आप रेस जीतते हो. डू नॉट हेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, you are learning English. Do not run. Do not go fast. Do not make haste. Haste यानी जल्दबाजी. Do not hurry. Do not haste. Slowly, steady wins the race. धीरे धीरे ही रेस जीती जाएगी. Slowly and steady wins the race. हिंदी में धीरे धीरे स्थिर होकर रेस जीती जाती है. Now you have heard the story of tortoise and the hare, rabbit and tortoise, कछुआ खरगोश. कछुआ tortoise, खरगोश rabbit. जीत खरगोश की नहीं, कछुए की होती है. Slowly, slowly, धीमे धीमे रेस जीती जाती है. English also, धीमे धीमे English सीखी जाती है. Slowly and steady learns the English. But if you want to learn English, go slowly. Do not haste. Today is the 4th class we are doing. In the 4 days, we learned the models. We started the tense part. We learned the opposites, the names of vegetables, the names of professional. So slowly, we will cover these new ideas of English. Now, let's get to the speaking part. Okay. In today's part, we shall see greetings. सामने वाले को किस तरह से आप greet करते हैं. Just see your screen and read this word slowly in your mind. ये words आपको पता हैं, ये words आपको आते भी हैं. Just read this word to understand इन्हें बोला कैसे जाएगा. Just read for a second in your mind. Okay, Naresh, just unmute and read the first words. Hello. Okay, Hi. continue. Good morning. Afternoon. Okay. Evening. Okay, good morning, good afternoon, good evening. Continue. Good. Nice to see you again. So you can say good to see you again, nice to see you again. आपसे मिलके अच्छा लगा. Nice to see you again. And last, I am glad, मैं happy, खुश हूँ. I am glad. I am happy. glad to see you. And I am pleased to see you. You see, in these sentences, you have to keep the first part same. I am glad. Okay. I am happy. I am pleased. Pleased yani खुश to see you. Okay. Now next 3 sentences. How are you? Naresh, continue. Okay. Answer. Fine. Thanks. And you? And you. Okay. जब आपसे कोई पूछता है how are you, I am fine. Thank you. Thank you is also important. मैं खुश हूँ. Thank you. Next. How have you been?
been. आप कैसे हो? How have you been? How are you की जगह आप ये पूछ सकते. In place of how are you, आप ये पूछेंगे how have you been? Very well. Okay. And last, How are things? कैसा चल रहा है? How are the things? The answer, not too bad. Okay, Naresh, thank you so much. So आप जब Welcome. बात करते हैं how are you? How are you? Then you can say I am fine. Thank you. You can say I am good. Thank you. It's going good. Thank you. ये बातें आपके जबान पे होनी चाहिए, आपके टंग पे होनी चाहिए. You should be able to speak clearly and confidently. Greetings. And next part is introduction. आप किस तरह से अपने बारे में बताएंगे. Okay. Introducing myself. आप किस तरह से अपने बारे में बताओगे. May I introduce myself? May I introduce? मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा. Let me introduce myself. मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा. ये शुरुआत करने का तरीका है. It's a way to start your topic. आप बात करना चाहते हैं, उसके पहले बताइए. May I introduce myself? Let me introduce myself. Third sentence, I would like to introduce. I would like to introduce. वो D means would होता है. D means would. I would like to introduce myself. So see, this is the page for your reading. ये पेज आपके रीडिंग के लिए. Just take few minutes and read these pages. Read this page actually. How you get the idea. When you meet someone, जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, you can speak, hello sir, myself Vinayak, how are you? First तरीका. Second तरीका, second way, let me introduce myself. Let me introduce myself. Again, myself Vinayak Saxena. So when you start the talking, when you start the communication, start like this. Myself Vinayak Saxena. Myself Divya. Myself Naresh. Myself Krishna. And then you start talking. And if you want to ask something, use excuse me. अगर आप जाना चाहते हो, you are going, आपके जाने का टाइम हो गया है. Excuse me. May I leave now? May I leave now? अब मेरे जाने का समय है, मुझे आज्ञा दीजिए. Excuse me, gentlemen. May I leave now? So these are the basic words, how to talk, how to introduce yourself. Now, this is for today's class. For today's class, we have come to the end part. We studied the models. We studied the first tense, tati te, bhuliega mat. In Hindi, tati te. In English, V1 or S या ES. Ram goes to school, children go to school. एक है तो S या ES लगाना है, नहीं तो नहीं. Negative, does not, एक के लिए, do not, बहुत सारों के लिए. So, this is for today's class. Okay now. So we have ended the class now. We have come to the main conclusion. If still you want to ask something, let me know. You want to ask something? कुछ पूछना चाहते हैं आप? Okay, class. Thank you so much. Thank you, I'll see you sir. tomorrow. Okay, welcome Thank to you, all of sir. us.